then geometrical optics, quantum optics, and wave optics are these are the types of optics. And in this particular quantum particle, or say that in quantum optics, particle nature of the light; in wave optics, wave nature of the light; in geometrical, we can consider the ray. Then what is geometrical path? It is the shortest path between the 2 points, so that is geometrical path. And optical path is when the light is traveling in a denser medium, so that is moving slower, few times slower in that medium. So if you want to compare these two paths, so we have to write this relation: delta is a path difference, or sorry, delta is a say optical path which is equal to the mu times the geometrical path. So geometrical path ये है कि shortest path between 2 points when the light is traveling through the either air or vacuum. Optical path ये होता है कि when the light is traveling in a denser medium, so denser medium में definitely whose refractive index is more, so light is moving slower. So how much it covered when the that density is not there, so that is a optical path, a geometrical path. So geometrical path or optical path equivalent कब होगा? So when we can say, or we can write optical path is equal to mu times geometrical path, then and then it is possible. Then we have to learn the what is path difference and phase difference. What is path difference and phase difference? I'll explain in short what is path difference. Suppose this is use the field here. So let me draw first. This is a one wave and this is another wave. Okay, so see, this is a wave which is starting from the crust. It is reached. So what is the wavelength of this? Suppose this is a point A and this is point B. So wavelength of this wave is 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. So this is 4.5 lambda. So AB is how much? 4.5 lambda. We'll take another wave. So which is starting from the again crust. So it can cover this much of distance. This is a different wave. So this is point C. So CB is how much? So 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. So this is a 5 lambda. What is a path difference? Generally, specifically, I'll show with the delta. Delta is a letter to show the path difference. So path difference means the length, wavelength. 0.5 lambda. Okay, means lambda by 2. So this is a path difference between these two waves. So in this way, you can calculate the path difference between these two waves depending on the length of the wave. Now I have to say, or I have to need to write this path difference in terms of phase difference. So phase difference कितना होता है? I'll try to explain with the help of that circular motion. So ये मान लो कि आपका एक circular motion है. ओके, एंड करस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ करना चाहते हैं कि इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आएगा. सो सी, सपोज व्हेन द पार्टिकल, दिस इज a center and particle is at point P, and this is what about the axis. So this is a O, this is O. When particle is at point P here, now when particle is reached to the, this is P dash. So our wave is divided into equally. This is pi. This is say pi by 2, not pi. This is pi. This is 3 pi by 2. This is 2 pi. In angle, I'll say this is 90. This is 180, 270, and 360. When particle is at point P and it moves from P to the P dash, so our wave is moving from here to here. Okay. Then when particle is moved from P dash to P double dash in circular motion, so our waveform is travel from this to this. So see, this particle moves from P to the P double dash. So our waveform is moved from 0 to, suppose, this P. I'll say this is a P dash and P double dash like this. So how much phase covered here? So phase, ये जो एंगल है, phase एंगल is 180. तो इसमें 180 एंगल कवर्ड किया. मान लो कि ये हमारा वेक्टर है एक,
और ये वेक्टर पॉइंट पी पे, जैसे यहाँ से ये वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये वेक्टर यहाँ से ऐसे चला जाएगा ऊपर, तो ये 90 डिग्री। देन द वेक्टर इज मूव्स हियर, सो दैट वेक्टर, तो ये वेक्टर ने कितना एंगल किया कवर्ड, तो 180 और लाइक दिस पूरा, सो विल से पाई और 180 लाइक। सो यू कैन फाइंड द फेज ऑफ द वेव एट एनी इंस्टेंट। मान लो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो यहाँ तक पार्टिकल रीच हुआ, यहाँ से 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना फेज हुआ, तो मान लो कि यहाँ आ गया था, तो यहाँ से यहाँ कितना फेज आ गया, तो दैट इज फेज डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट। अब ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि अगर ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगा, सो हाउ मच डिग्री ये कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री। करस्पॉन्डिंग टू रेडियन में अगर हम लिखते हैं तो 2 पाई रेडियन होगा, राइट। तो ये हो गया वन रोटेशन के लिए। सो वन रोटेशन ऑफ द पार्टिकल कवर्ड 360 एंड करस्पॉन्डिंग टू पाई रेडियन। तो हमें कन्वर्जन ये करना है कि ये देखिए, एक रोटेशन मतलब ये वेव यहाँ से यहाँ चला जाएगा एंड देन अगेन कम टू द दिस पॉइंट, दिस अप टू दिस। सो ये जो पूरा वन वेव है, तो इसका वेवलेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे वन रोटेशन का, दिस इज कंपेरेटिवली लैम्डा, इसके साथ इक्वेट होगा। इट मींस व्हाट, फाइनली एक रिलेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लैम्डा करस्पॉन्ड टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री मींस 2 पाई रेडियन, समझ गए। अब अगर हम लैम्डा बाय 2 करेंगे हाफ, तो ये आएगा पाई। सो इट मींस व्हाट, लैम्डा करस्पॉन्ड टू 2 पाई, ये रिलेशन मिल गया। तो पाई करस्पॉन्ड टू कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में ये रिलेशन मिल जाएगा आपको। अगर स्टैंडर्ड लिखना चाहते हैं, सो विल राइट दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा into instead of delta, I'll say this is a phi, the phi is equal to 2 pi by lambda into delta. What is this phi? So phi is a phase difference which is equal to 2 pi by lambda into path difference. Okay, so path difference and phase difference को अगर हमें equate करना है, so we'll write now. Now see in this figure, especially what is the path difference in the above diagram? So path difference is here, that is a I think lambda by 2. So corresponding phase difference you have to find. So path difference phi is equal to 2 pi by lambda into how much path difference will get here, lambda by 2. So this lambda by 2 gets cancelled, 2 gets cancelled. So हमें phase difference मिल जाएगा pi. So remember phase difference is pi and corresponding path difference कितना था, lambda by 2. तो एक path difference and phase difference के बीच में जो relation है ये मिल गया। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। क्लियर? No. तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज हाईलाइटेड फॉर्मूला, यू कैन नोट डाउन समवेयर। सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ये ध्यान में रखिए। देन करस्पॉन्डिंग जो भी आप कोई एग्जांपल में देता हूँ, मान लो कि आई विल टेक ए वन एग्जांपल। सो और पाथ डिफरेंस इज 7 lambda by 2. Remember path difference is always in terms of lambda. Find the corresponding phase difference, 2 pi by lambda into path difference कितना था, 7 lambda by 2। तो ये 2 कैंसिल होगा, ये lambda lambda कैंसिल होगा, so remaining is 7 pi. This is a phase difference. So you can calculate the phase difference if you know the path difference. This is what related to the phase difference and path difference. Okay, then we have to move ahead with the principle of superposition. Anybody knows the principle of superposition? Yes, principle of superposition. When we call two waves are in phase बोलते चलो, and out of phase when we call. Yes, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes sir, yes sir. तो बताइए आप, इन फेज क्या होगा, आउट ऑफ फेज क्या होगा? इन फेज किसे कहते हैं? When we call When two are, so when the yes, crust is upon crust, then we called is it in phase, and when
the crust and trough overlaps, then we call it the out of See, phase. this is a one When two source. or when two Okay, or more waves reaches at a point simultaneously. then क्रस्ट जर एकमेकावर आल्या तर मग आपण किंवा ट्रफ एकमेकावर आले तर आपण हे म्हणतोय त्याला see, इन the फेज. initial of this wave is crust and end of this wave is crust. Now, if the same type of wave which is starting from the crust and end with the crust, suppose here the wave gets ended. So it is starting from the crust and end with the crust. Then the path difference between these two is multiple of n lambda. So that n is what 0, 1, 2 and so on. Then that two waves are in phase. अगर ये in phase है और interfere हो जाते हैं तो resultant amplitude, see, ये अगर एक wave है, this is a another wave whose amplitude is suppose a, ये wave है जिसका amplitude b है, तो ये दोनों जब interfere होंगे एक point पे, so resultant wave मिलेगा जिसका amplitude क्या होगा C, विच इज ए प्लस बी, इन दोनों का। अगर इस टाइप का सुपरपोजिशन होता है इसमें, व्हेन टू वेव्स आर इन फेज and meet at a one point, so resultant addition is a vector sum of this individual and that is a plus b. So what the resultant amplitude क्या हुआ इसका c increase हुआ, and we know one thing, intensity of light is proportional to the square of amplitude. अब जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस वेव का डेफिनेटली इंटेंसिटी ज्यादा होगा, सो दैट्स व्हाई we'll get a bright point when two waves meet in a phase. Okay, second thing is a that is called as a constructive interference. So remember, this is a constructive interference. Second thing, when we say two waves are in out of phase, आउट ऑफ फेज क्या बोलते हैं, तो एक वेव है जिसका स्टार्टिंग क्रस्ट से और जहां जैसे भी हो ये और एंड ट्रफ है, अनदर वेव whose starting is even though from the crust but end is different, or starting is from the trough and end is not same like this, end is here, so then these two waves are in out of phase. When that two waves are meet, so resultant amplitude is a again vector sum, but यहाँ पे क्या होगा subtraction, तो यहाँ पे जो c amplitude आएगा that is a minus b. अगर मान लो इसका a था और इसका b था amplitude, तो c आएगा a minus b. अब इसकी amplitude क्या है, इसका कम है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल है तो कम होगी, कम मींस यहाँ पे हमें मिलेगा डार्क पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा एंड व्हाई, द रीजन इज दिस। देन सेकंड थिंग वी हैव टू सर वन डिफरेंशिएट। डाउट यस। सर, वो आपने ए और बी जो अभी जो लिखा है ना, एक क्रस बना है एक ट्रफ बना है, अगर ना इस केस में अगर दो मतलब ट्रफ से शुरू ये ट्रफ से शुरू होता है फिर क्रस से शुरू होता है और एंड अलग होता तो सी, अगर दो वेव में पाथ डिफरेंस n लैम्डा है ना, मतलब एक वेव का डिफरेंस है, एक वेव लेंथ का, ऐसे फिर कहीं से भी स्टार्ट होने दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दो का फर्क रहने दो, ऐसा मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा अगर आता है तो कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर ये डेल्टा एन माइनस प्लस और माइनस हाफ ये लैम्डा इस टाइप का होगा तो डेफिनेटली हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, मतलब लैम्डा बाई टू, लैम 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस टाइप का, मतलब हाफ वेव का ये जो अगर इस टाइप का लॉस है इतना, या तो पूरा इतना लॉस है ना, समझ रहे ना, या तो फिर इतना लॉस, ऐसा अगर लॉस है डिफरेंस है इसमें, तो उस टाइप में मिलेगा डिस्ट्रक्टिव, चाहे वो कहीं पे भी इंटरफेयर होने दो, कहीं से भी स्टार्ट होने दो, कोई तो फर्क मतलब नहीं जिसमें पड़ेगा। लैम्डा बाय 2 का लॉस होगा वही ना। हाँ, इफ द पाथ डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय n लैम्डा देन कंस्ट्रक्टिव होगा, एडिशन होगा। इफ द डिस्ट्रक्टिव टाइप होगा तो उसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के फॉर्म में, समझ रहे ना। तो अब यस सर। जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप कुएं में अगर स्विमिंग करने जाते हो, सो अब यहाँ से कोई अगर यहाँ पे हम समझे उसमें डुबकी लगाते हैं तो ये एक वेव फॉर्म क्रिएट करता है सराउंडिंग में, है ना, ऐसी, और ये वेव यहाँ जाके इक्वल डिस्टेंस पे जाके वो रिफ्लेक्ट होके आती है
और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो यहाँ पे एक लार्ज वाली वेव क्रिएट होती है। सो दिस इज ए कंस्ट्रक्टिव। अगर आपने इस साइड में कोई साइड में जंप किया हुआ है और यहाँ से वेव निकल जाती है, तो आपकी ये जो वेव है इसको जाने के लिए टाइम लगेगा ज्यादा, और ये जल्द से जल्द जाके आगे रिटर्न। तो ये जब रिटर्न आएगी, तो इसने जो पाथ कवर किया कम किया हुआ है और इसने कम किया, मान लो कि ये अलग अलग है, तो ये मे बी चांसेस की डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी और ये एम्पलीट्यूड हमें कम मिलेगा। Like this type of, you can imagine, interference is a superposition of this wave, but superposition में भी अगर कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द इन फेज और आउट ऑफ फेज। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो वेव हो रही है तो आउट ऑफ फेज हो रही है, इन फेज हो रही है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग, हाउ यू डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। कैसे इंटरफेरेंस को डिफाइन करेंगे? देखिए पहले केस में क्या हुआ, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी राइज हुई, इन द सेकेंड केस इंटेंसिटी ड्रॉप। डिक्रीज हुई। सो इट मींस व्हाट, एक तो इंटेंसिटी एनहांस हुई और एक में इंटेंसिटी कैंसिल हुई। सो यू कैन से एनहांसमेंट और कैंसिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यू कैन से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और और क्या बता सकते हैं? टेल मी डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, बिकॉज आगे भी जाना है। amplitude, एक तो हम लिख सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, redistribution of intensity of light, बट और इसमें एनर्जी भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो redistribution of intensity of light or energy due to what, due to superposition of waves बोलते चलिए। So redistribution of intensity of light due to the, or energy due to the superposition of waves, and then superposition में क्या होता है ये पता है। Then example everyone knows, when we observe the soap bubble under the, ये सोप बबल है और इसको हम अगर सनलाइट के अंदर देखते हैं, सो व्हेन द सन रेज इंसिडेंट ऑन इट, व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या देखता है आपको? रेनबो। रेनबो दिखता है व्हेन सोप बबल, इफ वी ऑब्जर्व अंडर द सनलाइट। बाकी लोग कहाँ हैं? So Vibgyor. So when suppose this is a sun and which incident or the sun incident or the light is falling on the soap bubble, so yes soap bubble है, तो if you observe from this end, so you will observe, आप यहाँ पे है तो आपको ये कलर दिखेंगे, राइट? सो दिस सोप बबल यू आर ऑब्जर्व कलरफुल, इज ए Sir, कलरफुल, total internal reflection. दैट इज इन रेनबो। बट हियर सोप बबल, आपने सोप बबल पता है आपको, तो वो सोप बबल इफ यू ऑब्जर्व अंडर द सनलाइट, you will observe that soap bubble is looking colorful, and that is the example of interference। means what happens, this be acts as a denser medium, and ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं और ये दिख रहा है आपको कलर। तो यहाँ पे डिस्पर्शन टाइप बोल सकते हैं आप, लेकिन इट बिहेव लाइक ए प्रिज्म। सो जैसे हर एक, जैसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा तो इसमें से अलग अलग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे अगर कलर दिख रहा है आप लोगों को, इट मींस व्हाट, यू आर or the condition of constructive interferences get satisfied। Sometimes you will not observing the color, it looks like a black, so that means what, it satisfied the destructive interference conditions। So this is the best example to observe the interference on a thin film। It's look like a very thin film, uniform film। आप ये सोप बबल देखेंगे तो अंदर से ये तो पूरा एम्प्टी है, यहाँ पे एक फिल्म बना हुआ है सोप सॉल्यूशन का, तो ये यूनिफॉर्म है एंड ट्रांसपेरेंट है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ थिन फिल्म
remember. Okay, so next have to discuss the Stokes law, जो हमने डिस्कस नहीं किया शायद और अब तक, है ना? झालं की नाही झालं सांगा. हो सर. नाही झाले सर. नाही झालं सर. हाँ, Stokes law नाही is, नाही. now see carefully what is Stokes law, because ये समझना necessary है क्योंकि next derivation is totally based on this. See, this is a one say denser medium, we'll say this is a glass medium, और जिसका refractive index mu है which is 1.5, और यहाँ पे air है and this is again air medium. See, suppose I'll incident the light on it, light ray. So what happens? The ray of light gets reflected and some part of light gets transmitted here and reflected from this end, right? ऐसी situation होगी, और some maybe gets transmitted here. अब ध्यान में रखिए, when the light is incident on a, see, this air whose refractive index is 1, एंड ये जो एयर है इसका भी 1 है, और ये जो ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5. अब कंपैरेटिवली ये बन जाएगा आपका रेयरर मीडियम एंड ये बन जाएगा डेंसर मीडियम. अब जैसे कि लाइट रेयरर मीडियम से ट्रैवल कर रही है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ refractive index 1.5, so some partial reflection of light takes place. And in this wave, see, this is a wave, मान लो कि ये वेव ऐसी ट्रैवल हो रही है और इसका क्रस्ट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो अब जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये ट्रप से होना चाहिए था, लेकिन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट अगेन, ये क्रस्ट से ही स्टार्ट होगी, मींस हाफ ऑफ द वेव, जो जो नेक्स्ट क्रस्ट था वो लॉस हो गया. सो दैट हाफ ऑफ द वेव लेंथ दैट इज आइदर गेट्स एडेड और गेट्स सब्सट्रैक्टेड. सो लैम्बडा बाय 2 इतना लॉस इसका यहाँ पे हुआ है या गेन हुआ है ऑलरेडी इसमें, तो हम इसे बोलेंगे फेज चेंज ऑफ पाई हुआ है यहाँ पे. सो देयर इज एन फेज चेंज ऑफ पाई व्हेन द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर बाउंड्री. In case of refraction, there is no phase change. यहाँ पे कोई phase change नहीं है. Even in all refraction, remember, there is no phase change. I'll write here, in case of refraction, at any case, there is no phase change. कभी भी phase change होता नहीं है. ध्यान में रखिए. If the light is refracted, then only phase change is only if light ray reflected from डेंसर मीडियम, तभी होगा. डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तभी होगा इसमें. अब बताइए इसमें फेज चेंज नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो रेयरर मीडियम बाउंड्री है तो यहाँ पे भी फेज चेंज नहीं होगा और ये नहीं कंटिन्यू होगा, और इस केस में भी ये नहीं होने वाला है. So remember, when the light is reflected from the denser boundary, then and then there is an phase change of pi. In other case, there is no phase change. Now, the question is this: if I say this is the layer of a medium, ओके. अब ये जो है ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, और यहाँ पे ये जो मीडियम है दिस इज एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. अब मान लो कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द रेयरर बाउंड्री, डेंसर बाउंड्री, तो ये एयर से आ गया एंड इंसिडेंट ऑन ए ग्लास, सो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम. क्या फेज चेंज हुआ यहाँ पे? यस सर.
Yes, Yes, that sir. Yes, is sir. change of pi because it is reflected from the higher refractive index. Now, if I compare the air and glass, which is rarer and which is denser? So air is a rarer and glass is a denser. denser. If I compare this glass with a water, then remember this is a rarer and this is a denser medium. ओके सो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर होगा, जिसका ज्यादा होगा वो डेंसर होगा. तो यहाँ पे अब ग्लास से रिफ्लेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली इसमें फेज चेंज हुआ है. देन इन केस ऑफ दिस रिफ्रैक्शन देयर इज एन फेज चेंज. तो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फेज चेंज कभी भी होता नहीं है. देन द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस बाउंड्री. क्या फेज चेंज हुआ? Yes. ये सर होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. देयर इज एन Yes, sir. यस फेज चेंज. और इसके बाद और ट्रांसमिशन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है तो फेज चेंज हुआ. No, sir. नहीं No, सर. sir. No, sir. लेकिन ये जो हुआ था फाई वो कंटिन्यू हुआ. ओके देन यहाँ पे ट्रांसमिशन में फेज चेंज होगा? No. नो सर. No, No, sir. sir. नहीं होगा क्योंकि कभी नहीं होगा इसमें. फिर रिफ्लेक्शन में होगा? यस सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नहीं, ये No, sir. आपका एयर मीडियम है और ये भी एयर मीडियम है. तो ये फिर से एयर आ गया नीचे ना ग्लास स्लैब, तो यहाँ पे भी नहीं होगा. और ये नहीं नहीं अपना नहीं कंटिन्यू हुआ. ओके सो नो नो ध्यान में रखिए. सो व्हेन फेज चेंज इज देयर दैट यू सर कैन इसमें ट्रांसमिट नहीं होगा क्या क्लास सरफेस से? यहाँ से हाँ. होगा ना, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है हम, तो फेज चेंज नहीं होगा इसमें. अब आप यही भी बोलेंगे कि यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होता है तो क्या हुआ, बताइए. If I ask when the ray is reflected from this boundary, is there the phase change? No, sir. नो No, सर. sir. If I say the ray is reflected from this, is there the phase change? यस सर. No, No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. It is rarer again. So किसी भी केस में नहीं होगा, only ये दोनों में होगा. Okay, तो टेक केयर. तो ये रे में एक फेज चेंज हुआ है और दिस रे में एक फेज चेंज ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था, वो कंटिन्यू हुआ. सो दिस टू रे सफर द फेज चेंज ऑफ पाई. ओके क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now next thing is what is thin film. What is thin film? So thin film, it is a transparent layer whose thickness is in the range of few एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. इतना स्मॉल. आप बताइए कितना, इमेजिन करिए कि कितना स्मॉल ट्रांसपेरेंट लेयर होगा whose thickness is in the range of few angstrom. So that is a thin film. You can take an example of soap bubble. So this soap bubble is very thin. So ये आपका thin film है. या तो you'll observe the some coating or spec glasses, that is a thin film. So ये thin film है. And what is uniform thickness of the thin film? So uniform thickness होती है, so thickness of the film is throughout uniform. मतलब ये ऐसी uniform thickness वाली, ये uniform thickness यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, ये यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे भी थिकनेस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सो इक्वली है. सो दिस इज यूनिफॉर्म थिकनेस. सम केसेस में वेरिएबल थिकनेस होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, ऐसे कुछ है. सो दिस टाइप ऑफ, है ना. So this is not uniform. So uniform thickness is what throughout the thickness is same. So this type of see, so we can call that is a uniform thickness. Now we are interested to derive the relation for interference in uniform thickness of the thin film. So that is a very important derivation. Interference due to uniform thickness of film, thin film.
Okay, so before that, I'll ask the question: what is the condition for constructive interference? Will tell me condition. Frequency should be same. Yes. Both arrays should be in same phase. No, no. I'm asking condition for constructive interference. Delta कितना चाहिए? N n lambda. lambda. n lambda. N n lambda. N lambda. 0, 1, 2. and phase difference कितना चाहिए? As per our formula, 2 pi by lambda. 2 pi by lambda into n lambda. n. So lambda 2 lambda pi cancel. n. Okay. This is phase difference. Clear? And then what should be the condition for destructive interference? n plus 1 lambda by 2. N plus or minus 1 lambda by 2. और कोई कोई ऐसे भी लिखता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस हाफ लैम्बडा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो यू हैव बोथ ऑप्शंस. एंड करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा देन? 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस. करिए इसको, बताइए कितना आएगा? n लैम्बडा बाय 2 प्लस lambda by 2 plus or minus like this. या तो आप ऐसे ही रख सकते हैं इसको, 2 So pi 2 by pi n plus 1 by Hey. n plus minus 1. Oh. कितना हो गया? n plus minus 1 into pi. n प्लस और माइनस 1 इंटू पाई. ये भी कंडीशन हो गई. तो ये आपका कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, ये ध्यान में रखिए. ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. now we have to move towards the derivation part of the uniform thickness of the thin film. So I think today we'll finish with the diagram only, then we'll discuss tomorrow. So see the diagram carefully so that derivation आपको easily समझ में आएगा. So diagram of the uniform thickness of the thin film थोड़ा सा पहले हम करेंगे. इसके लिए आपको एक thin film लेना है ऐसे. ओके, ये थिन फिल्म है. ये पता है ये थिकनेस टी है. नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द फर्स्ट नॉर्मल हियर. दिस इज माय फर्स्ट नॉर्मल. दिस इज ए second normal and this is the third normal. Okay, then I'll incident the light on it. Okay, so light incident हुआ यहाँ पे कुछ एंगल से. Okay, then ये ऐसे चला जाएगा straight, but it is again remember the glass slab, so density is more, so it bends towards the normal. तो ये यहाँ पे bend हुआ है ऐसा. Then it is again reflected with the same angle. Okay, then ये यहाँ से reflect हुआ, then it is bend away again ऐसे. Then again there is an reflection that is continuous. Okay, so we are interested in this rays. तो ये जो है first one is a suppose A incident from the B, partial reflection, partial transmission. So if suppose this is angle of incidence I, then this is again angle of incidence as per the law of reflection. This is angle of refraction R. तो ये भी आपका कितना होगा? R होगा. और ये भी कितना होगा? R होगा. कोई डाउट है? ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये भी परपेंडिकुलर है.
कोई डाउट है यहाँ पे? देन I'll try to draw the, or say write the name. This is point C, this is point D, K. ये होगा बेटर कि मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको। ये है D पॉइंट, ये पॉइंट D वाला है, समझ रहे हैं ना? तो ये रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ एयर मीडियम, दिस इज एयर मीडियम, दिस इज this is a air medium, and this is what? Glass, whose refractive index is mu, and thickness is approximately T, that is in Armstrong. ओके, अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रे चला जाएगा, ऐसे यहाँ से चला आएगा, तो ये जो सिस्टम होगा इसे हम ट्रांसमिटेड सिस्टम बोलते हैं, एंड ये जो सिस्टम है इसे हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड है। अब what to do, we have to interfere these two rays, so ray 1 and ray 2, and that interference we have to observe. Okay, so ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, नॉट इन ट्रांसमिटेड सिस्टम। अब इसमें थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये आपका reflected ray in the same medium and this is in a denser medium, so we have to think towards the geometrical path and optical path. Okay, so when I say the ray traveling from A to the B with the speed of light c, and the ray is reflected in the same medium, so it will travel with again same speed, but when it is enter in a denser medium, so its velocity speed goes on decreasing because of the density or that refractive index. So this light is now moving B to the C with a slower speed and C to the D in a slower speed, so that what happens, ये रे अपना आगे चला जाएगा और ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, because it has to cover the more distance BC plus CD till that time that ray reflected from the B which is traveling further. So how much distance that ray is covered, that have to find with the help of this perpendicular line. तो मैं यहाँ से एक perpendicular line draw करता हूँ, और ये perpendicular line indicate us, so this much of distance they already covered. तो ये जो perpendicular line है, ये मान लो यहाँ पे मीट हो गई G पॉइंट पे, so this is G, this is F, and this is B, D, H. तो समझ में आ रहा है क्या कि सपोज एक छोटी सी स्टोरी में बताता हूँ, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम दिस टू दिस सेम स्पीड से, आप मान लो कि दो फ्रेंड है और बाइसिकल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप एक हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू आर बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, एक साथ है। अब एक फ्रेंड कहता है कि नहीं, आई विल गो विद द सेम रोड, तो ये फ्रेंड चला गया सेम रोड से सेम स्पीड से, बट तब तक दूसरा फ्रेंड जो है वो क्या कर रहा है, इट कैन ट्रैवल, जैसे कि उसने वो हाईवे छोड़ दिया और उस अच्छे रोड को छोड़ दिया और वो चला गया गांव में, तो ये गांव में जाके फिर रिटर्न आ रहा है, सो इट टेक्स सम टाइम बिकॉज रोड इज नॉट, और ट्रैफिक इज देयर, इट इज मूविंग स्लोअर। तो जब तक ये फिर रोड पे आ रहा है जाके अंदर जाके, तब तक अब उसका फ्रेंड चला गया यहाँ तक। हाउ टू फाइंड, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जितना भी डिस्टेंस कवर किया हुआ बीजी, अब बताइए जब ये बीजी ट्रैवल कर रहा था उतने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, बट ये स्लो था बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब बताइए जी के बाद जो रे चला जाएगा आगे और डी के बाद जो चला जाएगा, इन दोनों में पाथ डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज दे आर पैरेलल। तो ये पैरेलल रे में पाथ डिफरेंस जीरो होता है, तो इसके आगे पाथ डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है, बी टू जी जब ट्रैवल कर रहा है तो साइमल्टेनियसली बी सी टू बी डी कर रहा है। तो हाउ टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन these two, so for that you have to know this derivation, path difference between that two ray, which is equal to how much distance covered by this ray in the denser medium. Again remember this t is very small, which is in few Armstrong, so ये बहुत कम distance है, but that distance you have to take care. So mu times, we know the optical path, how to write mu times geometrical path. So geometrical path कितना किया हुआ है, BC plus CD minus
अपने ये जो डिस्टेंस कवर्ड किया हुआ है बीजी, तो ये दोनों का डिफरेंस जब निकलेगा तो ये पाथ डिफरेंस मिल जाएगा आपको कि कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ है इन अ रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज उसके आगे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. सो दिस इज अवर स्टार इक्वेशन that you have to remember what exactly we have to do. So you have to find the path difference between these two ray by using. So कोई डाउट है इस डायग्राम में? No, नहीं sir. नहीं सर। सर। तो क्या करना है डेरिवेशन में, ये समझ No, में आ sir. गया कि पाथ डिफरेंस निकालना है ना, पाथ डिफरेंस निकालना है यहाँ पे इन. तो हमें ये ज्योमेट्री यूज करके पहले तो हमें बीसी निकालना पड़ेगा. अब ये दोनों ट्रायंगल तो सिमेट्रिक है, तो बीसी और सीडी इक्वल होगा, तो ये भी मिल जाएगा. फिर इस ट्रायंगल को यूज करके हमें बीजी निकालना है, तो बीजी निकाल सकते हैं. इसमें एक और एडिशनल चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो आपका आर है और ये जो आई है, तो ये रिमेनिंग कितना हुआ? ये आई है तो ये 90 रिमेनिंग minus I. 90 minus I. 90 माइनस आई हुआ. अब ये 90 है तो ये कितना होगा? I. दिस इज Oh, आई. I. सो ये आई एंगल हुआ, तो ये भी एंगल मिल गए. तो ये सब आपको ठीक से डायग्राम कल ड्रॉ करके रखिए आपके नोटबुक में, फिर हम आगे का डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे. ओके. सर यस. सर वो जो अपना इक्वेशन है ना, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी जी का, उधर जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, यस. डेंसर मीडियम का. यस. यस. यस सर, थैंक यू. और यहाँ पे भी हम म्यू अगर डालते तो एयर का 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस सर. हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो ये ऑप्टिकल पाथ हुआ यहाँ पे एंटर होने के बाद रे का, और ये ऑप्टिकल पाथ को कंपेयर करेंगे हम म्यू टाइम्स, तो म्यू इज 1 अगेन हियर, सो नो नीड टू राइट हियर. तो इसलिए मैंने ये पाथ और ये पाथ का सब्सट्रैक्शन किया, और वो जो डिफरेंस आएगा ये इसी केस में आएगा, यहाँ पे ही आएगा. इसके बाद देखिए यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, तो ये पैरेलल है. So in the parallel ray there is no path difference, so only path difference is created in this region when the ray is traveling from BC to CD and BZ. So that we have to find the path difference, that and that path difference decided the either constructive or destructive interference takes place ahead or not. Okay, so that is the important. Okay, so I'll यस सर. stop here. Any doubt till इसमें कोई डाउट है? नो सर. Okay. नो सर. नो सर. नो सर. Can we lift, sir? Yes, yes. I take just minute. I have to take attendance. Don't left. Attendance is still pending. सर ही रेकॉर्डेड फाईल भेटेल का आम्हाला? मिळेल. सर ते स्कॉलरशिपचं जे आहे तर ते फक्त कमेंट्स आणि लाली त्याच्यासाठी आहे की राजशाहूसाठी पण आहे? सगळेच तुम्हाला नोटिफिकेशन पूर्ण दिलेले तर. म्हणजे आजचं जे लेक्चर आहे, सेमिनार आहे जो अच्छा ते त्याच्यामध्ये. कमेंट्स आणि त्याच्यासाठी. अच्छा, ते बाकीच्यांसाठी नाही आहे. Sir, now can we lift? सर लेफ्ट झालं.